सो हाय एवरीवन। आज है 8 तारीख एंड मंगलवार का दिन। मार्केट ओपन हो चुका है और जैसा प्लान में था मेरा कि गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एंड ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है जहां से कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है अभी। व्हाट आई कैन सी हियर इज जो कल के दिन का लो था वो आज के दिन सस्टेन हो सकता है। बस अगर निफ्टी की बैंक की बात करें, क्योंकि 50,400 के ऊपर सपोर्ट दिया है, तो एक रिजेक्शन कैंडल के साथ अगर क्लोज होगा देन दैट विल बी गुड। लेट मी ऐड द प्रीमियम्स आल्सो। Today also IB is high, that's why premiums are trading a little bit higher, but you have to go for a OTM option only. तो पहली बात तो ये है, जहाँ पर कल का दिन का लो बना था वो क्योंकि हाई को सस्टेन कर चुका है और इतना बड़ा गैप अप है, कहीं ना कहीं लोग बाय करने के लिए डरेंगे। गैप फिल हो जाए वो सोचेंगे, तो एक रिजेक्शन कैंडल वुड बी ग्रेट। There is a slight issue in Zerodha. It is 650 call option. I think going for a call option would be good option. Let me explain you the reason also. 2700 call option. There is a clear rejection in the call options. तो खुलते ही साथ, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो चुका है 74,200 का, तो जनरली लोग बाय करने के लिए अपना ऑर्डर पंच कर चुके होंगे। दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर जो भी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि देखो सीपीआर आज के दिन बहुत नीचे है, तो जो भी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है दैट इज नो नॉट सो ह्यूज। तो देखो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा राउंड नंबर आसपास है, जिसका कि ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाने के बाद रिजेक्शन शो कर रहा है मार्केट। Let me wait for the candle closing up. Otherwise, I can add the position right here. Look, क्योंकि यहाँ पर एक ओके, कोई नहीं, पोजीशन मैंने ऐड कर दिया है। There is a mistake. There is a mistake. There is a mistake. So I have to exit that position क्योंकि फुट में गलती से एंट्री हो गई। I don't think order will handle. Okay, I have got the price. I got the price of 180, which is high क्योंकि इसमें गलती से एंट्री हो गई मेरी, बट कोई नहीं, little bit higher price only, but probability would be I will be getting the whatever it is. Replace the stop loss also. The only concerning part is the support of Bank Nifty. Okay, I think I have got the stop loss right here. Because Bank Nifty has taken support exactly at 400. That's why the issue came. The better and best possible entry would be on the breakout of 200 and 160.
So no worries. First entry is a mistake, so keep it away. But the second entry is on right point only. What problem came is कि बैंक निफ्टी क्योंकि एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट ले रहा था, काइंड ऑफ एक फ्लक्चुएशन दिखाने के बाद मार्केट जा सकता है, और खुलते ही साथ 500 का ब्रेकआउट कर दिया, तो कहीं से भी रिजेक्शन पॉसिबल है नहीं। दोनों तीनों इंडेक्स में अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है। तो प्रीवियस डे के बायर्स को यहाँ पर टारगेट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दे वुड बी सिटिंग इन गुड प्रॉफिट्स ओनली। The best possible position could be in the put option only. The reason is there is a setup which says that whenever market breaks a round number at the opening itself, which today it has done only, breaking down of 22,500 and 74,200, and also Bank Nifty 50,500. So there could be a small retracement move happen. Look at the rejection candle. People would be happily placing the stop losses here. I'm telling about the option sellers. If a possible entry could be at this point, which is 100, then probability of getting the target or stop loss would be more easier, because यहाँ पर एक setup जो generate हुआ है, which is the breakdown of whatever low made by the 15 candle. There is a continuation type of pattern. There is no as such previous resistance available at this point. But yes, one better entry could have been saved us. There is no as such momentum here. Look at the previous day. After making the 915 candle, what a fantastic move came yesterday. But look at today. The move is negligible. The candles are very low, and also there is no momentum in the candle. The size of the candle is only 40 points, 40 to 50 points. You might think that it is high, but 40 points candle in Nifty, but premiums are not moving that much. It seems like
The candles are not interested in moving in our direction. If 10105 would be the entry, then it would be great to hold this trade for a bigger target or for a better momentum. But unfortunately, the wrong entry came into play. That's why the momentum I missed little bit. Let me place the entry line here. If this candle closes in red, then there will be no probability of this going high. Because what is happening here is the call option market is showing rejection so that people, option sellers, would be placing their stop losses here and here and here. And if the market goes higher, then they will be all hitting the stop losses. And today's market is not favorable for option buyers. Look at what's happening here, right? Hmm. First, in the first 5 minute range only, market stuck. So in this particular market, if I will be struggling to getting money from this, so I'll be losing up what I have gained. So that's why it's better to stay away from this kind of markets. Look at the momentum, right? The range it has made in the initial 15 minutes is only of 90 points, right? So in that 90 points, no doubt the gap up, you can see the 1.7% of hike, 1.7% का चढ़ाव मार्केट में ये कब होता है जबकि मार्केट एक जो न्यूज कल के दिन में वायरल हुई थी उसको अगर मार्केट ये समझ लेता है कि चलो टफनेस आ गई है मार्केट में न्यूज में पैनिक होने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने कि मार्केट में ये बताया कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट तब जाके इन्वेस्टरों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया होगा और आज के दिन वो लोग 22,500 के ऊपर मार्केट को ओपन किए होंगे सो दैट्स व्हाई टुडे we cannot see a retracement or gap filling as of now. But yes, market could be very sideways here and would not be able to cross 22,600 till 12 p.m. But in Bank Nifty, the resistance which it has faced right now is just below the 74,500. So below 74,500, if stays a little bit higher, कुछ टाइम ज्यादा अगर रह जाता है वहां पर 74,500 के नीचे, देन तो ब्रेकआउट पॉसिबल है ठीक है अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम ही पॉसिबल है so I'm telling about the sunsets and in Bank Nifty also there is a clear resistance of 50,800 which do you think gonna sustain definitely not so in Bank Nifty a could scalp could be possible but there is no point of giving money to Zerodha so let's see if any observations come I will update you there is a clear rejection from downside so I think people would be heavily buying that but look at the volumes there is negligible amount of volume. I told you in the first 5 minute candle only the volume is very less. And both the premiums are melted. Look, it is also came to 95 and
This has also came to 95. And so there is some melting of premium in both the options. And if you are trying to carry a overnight position, look at this. गैप अप के कारण जो 14% का एक हाइक मिला है प्रीमियम में, दैट इज फेयर इन कॉल ऑप्शन 14 पॉइंट्स का हाइक। लेकिन अगर सोचो गैप अप नहीं हुआ होता तो क्या होता, इस पुट ऑप्शन में 73% का डाउन है, नेगेटिव है। तो 73% का नेगेटिव यानी जो भी पुट के प्राइसेस कल के दिन बढ़े थे 1000% के आसपास, वो सारी जो पुट के प्राइसेस है वो ऑलरेडी बहुत कुछ मेल्ट हो चुके हैं। एंड इफ यू टेल अबाउट कितना बाकी है, देन ओनली अ फ्यू मोमेंटम इज रिमेनिंग, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में मिडिल ऑफ द डाउन ट्रेंड है मार्केट। तो कहीं ना कहीं एक जो ब्रेकआउट होने वाला होगा इस ट्रेंड का, तब जाके वो पुट के प्रीमियम ज्यादा अच्छे से मेल्ट होंगे और ज्यादा अच्छे से ब्रेक डाउन होंगे। जिस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस ले रहा है दैट इज डाउटफुल पॉइंट। Okay, so the option is totally melted here, but there is no as such fast momentum happening in this also. And there is no way possible that we can go for a put side trade here, because one red candle would be making the people think that come on and sell it, because gap fill हो जाएगा और नेगेटिव मोमेंटम ऑलरेडी है। तो वो सारी चीजें आ जाती है फिर ब्रेन में। पुट ऑप्शन में जाना बिल्कुल ही यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। यस, वी कैन वेट फॉर अ बैंक निफ्टी। लेट्स सी। सो ये जो पर्टिकुलर मूव आया है उसके बारे में ही मैं सोच रहा था। रीजन देखो, यहाँ पर एक जो सेटअप एक्टिवेट हुआ है मेरा, पहली बात, एक अच्छे रेड कैंडल के साथ जो प्रीवियस बायर्स थे उनको निकाला है मार्केट विद शोइंग द गुड वॉल्यूम, लेटिंग द पीपल सेल हियर, बिकॉज यहाँ पर अच्छे से वॉल्यूम दिखाया है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा। अगेन द नेक्स्ट कैंडल इज द फॉलो अप कैंडल, जहां पर फिर से अच्छी खासी वॉल्यूम आई एंड मार्केट क्लोज टू इन द प्रीमियम ओनली, इन दिस प्रीमियम व्हिच इज आउट ऑफ द मनी, इट हैज गॉन टिल 125। सो उसमें भी एक 5 पॉइंट का और एक स्ट्रेच दिखाया ताकि लोग अच्छे से सेलिंग साइड में बैठ सके, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग हायर। So if I would be waiting for this setup to be formed, then also it will be good. But कोई नहीं, जो भी मिला ठीक है। But look at this momentum. What is happening here? After breaking down this low, it has gone till high. It has made is 114, and the low it has made is 97. The previous candle low is right here 94. What could be possible here is a sideways market, no doubt, but also momentum could be possible in call option only, because the volume which has come in put option, which looks like it has tried to remove the buyers from the market. I'm not sure what is gonna happen. Okay, okay. So the support of Sensex is exactly 74,000. So possibility could be it can break the support. But there is no other support in Nifty as of now. But yes, Sensex support is good. Possible kind of momentum could be happen till the day low breakdown in Sensex, because exactly it has taken the support from 74,000. So let's see, I will update you what happens.